प्रिसिजन स्टडी चैनल आपण मानक स्वागत। आज विषयटी हूँ ओपीएससी ओएस 2022-23 रे आसीथिबा क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा ऑप्शन वाइज एलिमिनेशन मेथड रे, जहाँकि आगामी एग्जाम रे तुमर हेल्पफुल रहिबो। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, आपनकर रिवीजन भी होबो कौन भलिया क्वेश्चन आसुची एग्जाम रे, सही अनुसार आपण प्रिपेयर करि परिबे। वीडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। नेक्स्ट स्टार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। एटी मुख्य पॉइंट को आप देखिए, नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ G20 डेवलपिंग नेशन। G20 डेवलपिंग नेशन, इट इज ए ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग नेशन एस्टाब्लिश्ड ऑन April 30, 2001। April 30, 2001 रे एस्टाब्लिश्ड होइतिला कि ना, एटा August 20 रे 2003 रे एस्टाब्लिश होइतिला, जहाँ फल रे एई ऑप्शन टी रॉन्ग। दिस ग्रुप एमर्ज एट द 5th मिनिस्ट्रियल नाटो कॉन्फ्रेंस। नाटो कॉन्फ्रेंस नुह, एटा WTO कॉन्फ्रेंस, सेथिपई ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। द हेडक्वार्टर्स ऑफ G20 डेवलपिंग नेशन इज एट पटना। पटना रे अवस्थित, ठीक एटा। द मेंबर स्टेट्स ऑफ G20 डेवलपिंग नेशन इज 20 कंट्रीज। 20 देश यार सदस्य अछंती कि, हाँ एटा ठीक। ताहले एठी कहिछि नॉट करेक्ट, सेथिपई ऑप्शन डी टी हबो करेक्ट आंसर 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। ड्यूरिंग हिज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, PM नरेंद्र मोदी स्पेल्ड अबाउट 3 CS 3 DS 3 ES of India Australia friendship। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 CS। एटा से समय रे करेंट अफेयर रे थिला। 3 CS रो फुल फॉर्म टी कोन हबो कहिछि, कॉमनवेल्थ क्रिकेट एंड करी। सो ऑप्शन 8 इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आसुची, आपण करेंट अफेयर रु प्रिपेयर रहंतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंगल। सेंगल सिग्निफाई द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियंस। सेंगल ब्रिटिश ठारू भारतीय मान क्षमता हस्तांतर करथिला। हाँ, एटा जवाहरलाल नेहरू अगस्त 14, 1947 रे पावर ट्रांसफर करथिले ब्रिटिश माने जवाहरलाल नेहरू को। इट सिम्बलाइज द मराठी कल्चर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अदर किंग। एटा भूल, काहे कि एटा मराठी कल्चर नुह, एटा गोटे तमिल ट्रेडिशन। और ट्रांसफर ऑफ वन पावर वन किंग टू अदर किंग, एटा थिला इंस्पायर्ड हेतिला चोला डायनेस्टी रु, सेथिपई ऑप्शन 2 इज भूल। द सेंगल हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू पार्लियामेंट भवन ऑफ इंडिया। हाँ एटा ठीक। संसद भवन रे सेंगल पुनः प्रचलित करा जायछि, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सेप्टेड सेंगल एट 10:45 PM ऑन August 14, 1947 फ्रॉम अधिनम ऑफ केरला। ना एटा भूल। केरला रे तांको प्रेजेंट करा जाय नथला, से तमिलनाडु रे तांको दिया जायथिला, सेथिबे ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। ताहले ऑप्शन 1 and 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ 2000 करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। एटा करेंट अफेयर रे थिला। दिस मूव इज ए पार्ट ऑफ RBI's कंपाउंड नोट पॉलिसी। हाँ, RBI रो कंपाउंड नोट पॉलिसी रो एक अंशविशेष थिला। इट्स एम इज टू प्रोवाइड द पब्लिक विथ हाई क्वालिटी करेंसी नोट्स, माने उच्च मानर करेंसी नोट देबार यार एम थिला कि ना। RS 2000 करेंसी नोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015। ना, एटा इंट्रोड्यूस होइतिला 2016 रे नवेम्बर। सो एटा भूल। प्रिंटिंग ऑफ 2000 रुपीज करेंसी नोट्स वर स्टॉप्ड इन द ईयर 2018-19। हाँ एटा करेक्ट। सो ऑप्शन 1 and 4 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कोटा करेक्ट रिगार्डिंग फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज ए 5-year पार्टनरशिप बिटवीन USAID एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ एटा गोटे कार्यक्रम थिला एमानक मध्यरे, एटा ठीक। फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम डिनोट्स फॉरेस्ट फॉर वेल्थ एंड हेल्थ। ना, ये ऑप्शन टी भूल।
forest for sustainable landscape. So option 2 is wrong. Tetra Tech is building capacity across landscapes in 3 states in India. Yes, this is correct. भारतर 3टी राज्य प्राकृतिक दृश्यपटरे टेट्राटेक निर्माण क्षमता अटे. हाँ. The 3 states which come under this program are आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार. ना ए ऑप्शन टी भूल. यार सठिक टी होची आंध्र प्रदेश, केरला एंड सिक्किम, नॉट बिहार. ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. कोटा भूल इन रेस्पेक्ट ऑफ यूजीन सी. दिस सी इज ऑल्सो नोन एज रेड सी. या रेड सी कह जाउतला ना, यह ब्लैक सी नाम रे परिचित. सो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग. सो आंसर इज ऑप्शन ए. ओपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब फिल्डर करेबी मु. आपण भिडियोटी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट क्वेश्चन दे देखिबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडी इन इंडिया 2023 रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. The census enumerated a total of 24,24,540 water bodies across the country. एटा ठीक. वेस्ट बेंगल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स. टैंक्स रे हाईएस्ट नुहे से वाटर बॉडीज रे हाईएस्ट अच्छी वेस्ट बेंगल थिला. एटा भूल. तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स. यस, लेक रे तमिलनाडु हाईएस्ट थिला. आंध्र प्रदेश लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, नॉट आंध्र प्रदेश. दिस इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र जल संरक्षण योजना रे आगरे थिला. तो ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रे देखिबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नोमैडिक एलिफेंट. नोमैडिक एलिफेंट. इट इज एन इंडो मंगोलियन जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज. हाँ, यहाँ गोटे इंडिया और मंगोलिया जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज है. द 14th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज टुक प्लेस इन द ईयर 2019. यस, दिस एक्सरसाइज इज एम टू ट्रेन एलिफेंट्स इन डिफेंस एक्टिविटीज. एलिफेंट्स को ट्रेन दिया जाए नहीं, एठी आर्मी मान को ट्रेन दिया जाए. ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट. द फर्स्ट एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट टुक प्लेस इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश. फर्स्ट एडिशन ग्वालियर रे होई नथिला. Yeah. So option 4 is incorrect. Option 1 and 2, option D is correct answer. Next question. Which of the following statements each are not correct? कोटा भूल in respect of Botagaika crater. The Botagaika crater is situated in Australia forest. ना, सेटा अवस्थित शाखा रिपब्लिक रूसिया. Option A is incorrect. This region has become a focal point for studying the effects of climate change on permafrost. Yes, permafrost उपरे जलवायु परिवर्तन अध्ययन पाई एटा केंद्रबिंदु पलटिछि. ठीक. The Botagaika crater is affectionately referred as the sky in. ना, एटा incorrect. Mouth of hell. याकू mouth of hell बोली कहा जाए. The permafrost thaws release enormous quantities of organic carbon. जैविक कार्बन रिलीज करे. एटा ठीक. कोटा भूल कही. ऑप्शन 1 एंड 3. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ तालिस्मान सबरे एक्सरसाइज 2023. USA and France have initiated the Talisman Sabri exercise 2023. ना, एटा USA और ऑस्ट्रेलिया मध्यरे होथुआ एक्सरसाइज अटे. ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. इट इज जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज ऑफ द टू कंट्रीज. यस, ऑस्ट्रेलिया और USA. दिस एक्सरसाइज इज हेल्ड फॉर एवरी 4 years, नॉट एवरी 2 years इज द करेक्ट आंसर. So option 3 is incorrect. India attended as an observer to this military exercise. India observer हिसाब रे अटेंड करिथिला कि. yes,
सो ऑप्शन 2 एंड 4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। Which of the following statements are not correct in respect of Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill 2023? राजस्थान सर्वनिम्न निश्चित आय बिल 2023 संपर्क में कौन सेंटेंस ठीक नुह? अंडर दिस स्कीम एवरी फैमिली इज एंटाइटल्ड टू guaranteed employment for 125 days per year. Yes. This scheme provides guaranteed minimum monthly pension fixed at Rs 2000 per month for specific categories. 9. एटा होची 1000. Option 2 is incorrect. This scheme encompasses the flagship of Jawahar Roजगार योजना for urban areas. Urban areas नुह, एटा rural areas. Answer to rural areas हो. Option 3 is incorrect. To implement this program, government has estimated additional expenditure of 2500 crore annually. ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 2500 कोटी टंकार अतिरिक्त व्यय अटकल करिसेंती। सो कोटा भूल कहिछि ऑप्शन 2 एंड 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? कोटा भूल। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग रिलीज करिथिबा नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 कौन सेंटेंस टी भूल? 13.5 करोड़ पीपल एस्केप्ड फ्रॉम मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी। 13.5 कोटी लोक दारिद्र्य रक्षा पाइछंती। हाँ। इन रूरल एरियाज देयर इज रैपिड डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 32.59% to 19.28%। ग्रामांचल एरिया रे एतिके ह्रास पाइछि। हाँ। बिहार रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स। बिहार नो एटा बहुत स्टेट अछंती जार नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। सो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट। दिस रिपोर्ट कवर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी अक्रॉस 1075 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट। 1075 प्रशासनिक जिल्ला रे दारिद्र्य को नहीं व्यापक विश्लेषण कराइथिला ना। एटा होची 707 डिस्ट्रिक्ट 707 डिस्ट्रिक्ट को लेकिन एक्सप्लेनेशन करा जाइथिला। सो ऑप्शन 3 एंड 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप टू इंट्रोड्यूस एन एजुकेशनल इनिशिएटिव कॉल्ड सीएम राइज स्कूल। भारत में क्यों राज्य सरकार सीएम राइज स्कूल नामक एक महत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं? एटा डायरेक्ट क्वेश्चन जीके करेंट अफेयर। आंसर टी होची मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कोटा करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑन यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। सीमा पार कारबार पर स्थानीय मुद्रार व्यवहार संक्रांत राजीनामा संपर्क में क्योंटी ठीक क्यों उक्तिटी? इंडिया एंड यूएई हैव साइंड ए मेमोरेंडम इन दिस एग्रीमेंट। भारत और यूएई बुझामणा पत्र स्वाक्षर करथिले। हाँ। दिस एग्रीमेंट एनाबल्स ए फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड सेटलमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल करेंसी। हाँ। तांकर राष्ट्र मुद्रा रे वाणिज्यिक बंदोबस्त पाई रूपरेख प्रदान करथिले। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूएई। एटा भूल। इट वाज साइंड बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड अदर ऑफिशियल, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीके इंटरमार्क लिमिटेड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर द फर्स्ट यूजर ऑफ दिस सिस्टम ना। फास्ट यूजर होती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड एडहॉक जोटा कि फैसिलिट करथिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आउ आबुधाबी बैंक। सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। कोटा करेक्ट होइछि 1 एंड 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नामदा प्रोजेक्ट? नामदाक प्रोजेक्ट अनुसार कौन ऑप्शन टी ठीक? दिस प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एटा प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना कौशल विकास योजनार गोटे पार्ट कि एटी कृषि देछि।
एटा कौशल विकास एटा ठीक अच्छे। अंडर दिस प्रोग्राम 2200 कैंडिडेट्स फ्रॉम आसाम वर ट्रेंड 2200 प्रार्थी को प्रशिक्षित कराई कि आसाम रु नाई आसाम नो एटा जम्मू काश्मीर। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रिजर्व द एंडेंजर्ड क्राफ्ट्स ऑफ वूल वेविंग एटा ठीक अच्छे। दिस प्रोजेक्ट वर्क्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे प्रोजेक्ट काम करुछि। हाँ तो ऑप्शन 1 3 4 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द भौमकर स्टार्टेड एन इरा इन द ईयर 736 सी व्हाट इज द लास्ट नोन डेट मेंशन इन द भौमकर रेकॉर्ड्स। 736 सी वर्ष रे भौमकर गोटे जुग आरंभ कले। भौमकार रेकर्ड मानकर शेष जनाशुना तारीख कौन दिया आंसर टी हूँ 204। द भंजस ऑफ खिंजाली मंडल इनिशियली हेड देयर कैपिटल एट धृतिपुर। खिंजाली मंडल भंजस धृतिपुरा राजधानी रे आरंभ करते बट लाटर ऑन दी शिफ्टेड देयर कैपिटल टू किंतु परे एमाने तांकर कैपिटल को शिफ्ट कर देथिले तार नाम कौन थिला भांजुल भाका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू महाशिव गुप्ता बालार्जुन कन्सिडर द फॉलोइंग। महाशिव गुप्ता बालार्जुन को आधार करके तीनोटी स्टेटमेंट दिया यही हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट केतोटी स्टेटमेंट करेक्ट ठीक अच्छे। ही वाज द पांडुवंशी किंग ऑफ साउथ कोसला विथ इट्स कैपिटल लोकेटेड एट श्रीपुर। से श्रीपुर रे अवस्थापित राजधानी सह दक्षिण कोसल राजा पांडुवंशी थिले। यस ही एक्सटेंडेड हिज डोमिनियन बाय कैप्चरिंग सुवर्णपुरा मॉडर्न सोनेपुर। से सुवर्णपुरा आधुनिक सोनेपुर अख्तियार करी तांकर राजनीतिर परिसीमा को बढ़ाई। हाँ ही रूल्ड फॉर मोर देन 57 इयर्स। से 57 वर्ष रु अधिक शासन करते। यस सो ऑल 3 ऑप्शन आर करेक्ट। With reference to the creation of a separate province of Odisha, consider the following statement. ओडिशा रे एक स्वतंत्र राज्य गठन करने आधार में कौन उक्ति मानक विचार करा जाए। सेपरेट प्रोविंस ऑफ ओडिशा। हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव इच आर करेक्ट केतोटी स्टेटमेंट करेक्ट ठीक अच्छे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओडिशा ऑर्डर 1936 got the approval of the king on 3 March 1936 and Odisha became a new province on 1 April 1936. पार्लियामेंट ऑर्डर 1936 एप्रुवाल देथिला राजार स्वीकृति पाइथिला 3 मार्च 1936 रे। ओडिशा गोटे नूतन प्रदेश अनुसार 1 अप्रैल 1936 रे गठन होइथिला कि हाँ। सर जॉन ऑस्टिन हबाग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा एटा भी ठीक अच्छे। सर जॉन ऑस्टिन हबाग ही थिले प्रथम गवर्नर ओडिशा रो। सर कोटनी तेरेल द चीफ जस्टिस ऑफ बिहार एंड ओडिशा हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यू गवर्नर एटा भी ठीक अच्छे। बिहार और ओडिशा हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस को से ओथ करैथिले सर कोटनी टेरेल। द इनॉग्रल फंक्शन वाज हेल्ड इन रेभेन्सा कॉलेज हॉल एट कटक। उद्घाटन उत्सवटा रेभेन्सा कॉलेज कटक रे करा जायतिला कि हाँ। तो ऑप्शन 4टी जाक ठीक अच्छे। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल 4। महात्मा गांधी विजिटेड ओडिशा इन। महात्मा गांधी ओडिशा को केबे आसीथिले। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। व्हिच ऑफ द एबव इज नॉट करेक्ट कौनटा भूल। महात्मा गांधी प्रथम थर मार्च 1921 रे आसीथिले। अगस्त 1925 रे आसीथिले। डिसेम्बर 1927 रे आसीथिले। लास्ट थर से आसीथिले डिसेम्बर 1934 रे। तो ऑप्शन 4टी भूल हम। कपिलेंद्र देव सबड्यूड मेनी feudatory chiefs who rebelled against him. Which of the following did not belong to this category? कपिलेंद्र देव बहुत गुड़े सामंत प्रधान को बस करथिले जे तांको विरोध रे विद्रोह करुथिले। केउटी एही वर्गर अंतर्भुक्त नुहे नॉट बिलोंग टू। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर टी जीवो द चौहान्स ऑफ पटना।
बाकी समस्तଙ୍କୁ से तांकर अधीन रखिथिले। गंगासब खेमुंडी, मत्स्यब ओडाडी, शिलावंशीयब नंदपुरा एटा समस्तଙ୍କର तांकर अधीन रे थिले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कोउटा करेक्टली मैच होइनी? विचित्रानंद दास कुजीवर पत्रिका, विचित्रानंद दास कुजीवर पत्रिका सहित एसोसिएटेड नुहंती। एथिपाई होचंती ब्रजसुंदर दास। सो ऑप्शन एटा करेक्ट नुह। उत्कल दीपिका गौरीशंकर राय एसोसिएटेड। संबलपुर हितैषिणी नीलमणि विद्यारत्न। दैनिक आशा शशिभूषण रथ। व्हेयर डू वी कम एक्रॉस द माधवपुरा महाविहार? यार आंसर हो उदयगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा? कौटा ठीक नुहे प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा पाए? इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट द ऑब्नक्सियस टैक्सेस, घृण्य टैक्स एंड इल ट्रीटमेंट to the subject population by the feudatory chiefs of the गडजात स्टेट। यह घृण्य टिकस विरोध में आंदोलन थिला एवं गुजरात राज्य सामंत प्रधान द्वारा जनसंख्या उपर दुर्व्यवहार विषय वस्तु थिला। एटा ठीक आंसर। सारंगधर दास, हरेकृष्ण महता, पवित्र मोहन प्रधान एंड नवकृष्ण चौधरी वर द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। मुख्य लीडर गुड़ा सारंगर दास, हरेकृष्ण महत्रा, पवित्र मोहन प्रधान, नवकृष्ण चौधरी थिले। हाँ, इट स्टार्टेड विथ द मर्डर ऑफ मेजर बेजलगेट द पॉलिटिकल एजेंट इन रणपुर। यही युद्धटी आरंभ होता कि मेजर बेजलगेट राणापुर जड़े राजनीतिक एजेंट को हत्या ना यहाँ से भितर हत्या करा जायतिला, युद्ध भितर स्टार्ट करा ही नथिला। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए स्टेट इंक्वायरी कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड by the government under the chairmanship of Harikrishna Mahatab in 1937 to report on the condition of people in Gujarat state। यही ऑप्शन टी भी ठीक अच्छे। तो कौटा भूल कही? तो ऑप्शन सी इज द भूल। सुबेई, कचेला, जामुड़ा द थ्री साइट्स इन द अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा आर फेमस फॉर। ये तीनोटी जो स्थान देछि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट यही जगह कौन प्रसिद्ध? एटा हो जैन रिलिक्स। ओडिशा हिस्ट्री क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऋग्वेद। ऋग्वेद अनुसार कौन स्टेटमेंटा करेक्ट? इट मेंशन द आर्यन्स एज ए कल्चरल कम्युनिटी। आर्यन को सांस्कृतिक संघ भाव उल्लेख करिछि कि ऋग्वेद? हाँ। इट हैज मेनी कॉमनालिटीज विथ अवेस्ता। कॉमनालिटीज बहुत समानता अच्छी कि अवेस्ता सहित? यस। इट मेंशन सरस्वती एज नंदी तन्न? यस। इट इंडिकेट्स दैट द दस्यु केप्ट कैटल फॉर डायरी प्रोडक्ट्स? यस। सो ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। Consider the following statement regarding the Parthians। पार्थियंस मानक आधार रे कौन सेंटेंस टी ठीक? दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान? यस, से माने ईरान रु आसीथिले। दे सेट अप ए किंगडम इन ईस्ट इंडिया? ना, एटा भूल। से माने पर्सिया और मेसोपोटामिया रे तांकर किंगडम प्रतिष्ठा करथिले। ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। गोंडो फेरनेम वाज ए पार्थियन किंग? एटा ए जने पार्थियन किंग थिले कि? यस। दे आर मेंशन टुगेदर विथ द साकास इन द संस्कृत टेक्स्ट? ठीक अच्छी। तो ऑप्शन 1, 3, 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर उपरे 4टी सेंटेंस दिया जाइए, कौटा करेक्ट, कौन सेंटेंस मान। द नैरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड मेलका नाकू। संगम लिटरेचर टेक्स्ट गुड़ा को मेलका नाकू कहुला। द डिडाक्टिक टेक्स्ट आर कॉल्ड किलका नाकू। जोटा उपदेश दिया से पुस्तक को किलका नाकू कहुला। यस। थिरुकुलर इज ए मेजर संगम टेक्स्ट। यस। मेनी संगम टेक्स्ट वर द वर्क्स ऑफ ब्राह्मण स्कॉलर्स। ब्राह्मण छात्र कार्य कि संगम लिटरेचरटा ना, एटा भूल। एटा हूँ संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड बाय वेरियस बैकग्राउंड, नॉट ओनली ब्राह्मण स्कॉलर। केवल ब्राह्मण स्कॉलर मान कार्य नुह, एटा बहुत गुड़े स्कॉलर मान कार्य। तो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। से 1 2 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमोघ वर्षा ए किंग एंड ए कन्नड़ पोएट। हाँ, अमोघ वर्षा गोटे राष्ट्रकोटा एम्परर थिले। ठीक अच्छे, कौटा करेक्टली मैच होती कही। पांपा कन्नड़ पोएट अंडर जैन इन्फ्लुएंस। हाँ, तांकर वार्क गोटे थिला विक्रमार्जुन विजय। एटा ठीक अच्छे। नानिया बिगेन राइटिंग द महाभारत इन तेलुगु। हाँ, से तेलुगु रे ही तांकर महाभारत आरंभ करथिले। पन्ना जैन पोएट हु रोट्स ऑन रामायण थीम्स। एटा भी ठीक अच्छे। तो 4टी ऑप्शन जाक ठीक अच्छे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म उपरे 4टी स्टेटमेंट दिया जाइए, कौन स्टेटमेंट गुड़ाक ठीक देखा। इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय द पाला किंग्स। पाल राजा द्वारा पृष्ठपोषक होता। हाँ। बुद्ध वाज वर्शिप्ड एज ए गॉड इन महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म रे बुद्ध को गॉड हिसाब से मना जाउथला, पूजा पाउथले। ठीक अच्छे। हिनयाना कनसिडर बुद्ध एज एन ऑर्डिनरी बीइंग हु अटेंड निर्वाणा। निर्वाण प्राप्ति करुले हिनयाना रे। वज्रयाना फोकस्ड ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस। वज्रयाना हिंदू अभ्यास पर आलोकपात करथिले। ठीक अच्छे। 4टी ऑप्शन जाक ठीक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बुद्धिज्म 2 भाग में विभक्त हो जाता, जोटा कि गोटे महायाना बुद्धिज्म थिला, गोटे हिनयाना बुद्धिज्म थिला। ये 2 भितर बहुत पार्थक्य थिला। एटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे। बुद्धिज्म जैनिज्म इज द मेन फोकस सेंटर ऑफ फॉर प्रिलिम्स एग्जाम। ओपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस जो भी। एटा टिके भल भाव देखियो। Consider the following statement regarding Alauddin Khalji. He set up 3 distinct markets, one for food grains, one for cloth and third for horses. अलाउद्दीन खालजी मार्केट रिफॉर्म पर जनाशुना। मार्केट रिफॉर्म कौन राजा करते से होती अलाउद्दीन खालजी। तो ये ऑप्शन टी ठीक अच्छे। ए साना वाज पोस्टेड इन द मार्केट। गोटे साना और साना ई मंडी अपॉइंट करते जे कि सुपरवाइज करूला मार्केट को। तो यहाँ भी ठीक अच्छे। द पेजेंट्स हैड टू पे लैंड रेवेन्यू इन काइंड रे भी दौले, कैश रे भी दौले। तो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट। स्लेव्स वर ट्रांजेक्टेड इन मार्केट ड्यूरिंग हिज टाइम। यहाँ भी ठीक अच्छे। दास दासी बजार क्रय विक्रय होते। सो ऑप्शन 1 2 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्सिडियरी अलायंस इन ब्रिटिश इंडिया। सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली करथिले। द इंडियन रूलर साइनिंग द अलायंस वुड एग्री टू द पोस्टिंग ऑफ ए ब्रिटिश रेसिडेंट। इंडियन रूलर माने एग्री करुले ब्रिटिश रेसिडेंट गोटे जन को रखुले। यहाँ ठीक। द इंडियन रूलर कुड एम्प्लॉय एनी यूरोपियन स्टेट। ब्रिटिश बिना अनुमति रे से कौन सी यूरोपियन मान को एम्प्लॉय दे पारु नथिले। एटा इनकरेक्ट। द इंडियन रूलर वुड सीड ए पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिडी। से जदि माने सब्सिडी टैक्स दे पारु नथिले ताहेले से माने गोटे पार्ट तांकर दे दउथले। तो एटा ठीक अछि। एक्सपेंशन
of the British Army in the state to be shared with the company. British Army मानकर जो खर्च होउतला सेटा कंपनी शेयर दउतला कि ना कंपनी शेयर दोनों इंडियन रूलर माने शेयर दउतले तांकर तो यहाँ भूल तो ऑप्शन 1 and 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Consider the following regarding the revolt of 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 को विषय चारोटी स्टेटमेंट देछि कौन स्टेटमेंट गुड़िक ठीक. इंदौर ट्रुप्स हैड जॉइन द रिवोल्ट अगेंस्ट द विश ऑफ देयर किंग. इंदौर दल से राजा इच्छा विरुद्ध विप्लव योगदान करथिले कि हाँ यहीटा ठीक अच्छी. मंगल पांडे वाज एक्जिक्यूटेड एट मीरुट ना से मीरुट रे ताकू फांसी दिया नथिला ताकू बाराकपुर रे फांसी दिया जाइतिला. तांटिया टोपे वाज एक्टिव बोथ एट कानपुर एंड झांसी. तांटिया टोपे कानपुर और झांसी रे एक्टिव थिले हाँ. सिंधिया साउथ रिफ्यूज फ्रॉम द ब्रिटिश एट आग्रा हाँ यहीटा ठीक अच्छे. तो 1, 3, 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Consider the statement regarding the nationalist Ramesh Chandra Datta. Which of the following statements are correct? कौन सेंटेंस ठीक. He translated रामायण एंड महाभारत से रामायण महाभारत को ट्रांसलेट करते ठीक अच्छे. He was president of the Indian National Congress से इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट थे ठीक अच्छे. He qualified the ICS से इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करते ठीक अच्छे. ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द बंगीय साहित्य परिषद से प्रेसिडेंट थिले कि बंगीय साहित्य परिषद यहाँ भी ठीक अच्छे. चारोटी सेंटेंस जाक ठीक अच्छे. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होम रूल लीग. होम रूल लीग केबे हितला 1916 रे हितला. बाल गंगाधर तिलक और आनी बेसांत या आरंभ करथिले. एस सुब्रमण्य आयर वाज ऑन एसोसिएट ऑफ आनी बेसांत. आनी बेसांत गोटे एसोसिएट थिले सुब्रमण्य आयर ठीक अच्छे. इट स्टार्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ना यहाँ प्रेशर द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू एडॉप्ट ए मोर एसर्टिव स्टांस ऑन सेल्फ रूल नेवाई इंडियन नेशनल को प्रेशर देथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो यहाँ भूल अच्छे. इट चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा. यह निजर नाम को स्वराज्य सभा परिवर्तन करथिला ठीक. इट्स फ्लैग हैड द यूनियन फ्लैग ऑन इट यहाँ भी ठीक अच्छे. तो ऑप्शन 1, 3, 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर कौनटा अच्छी ताकू देखा. फल्टिंग फल एक्सकार्पमेंट सृष्टि हुए. वेब इरोजन हेले स्टैक्स. आइस काउटसिंग हेले कैटल होल. वाइन इरोजन रे यारदांस सृष्टि हुए. यारदांस गोटे सॉफ्ट और गोटे हार्ड रॉक या आम यारदांस कहूँ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. केयरफुली रीड द फॉलोइंग assertion and reason and select the correct option from the course. Scandinavian countries have a regressive age-sex population structure. age-sex population structure प्रतिगामी ढांचा अच्छी उनका. रिग्रेसिव यहाँ ठीक अच्छे assertion. The population growth rate is negative in these countries. For selecting the correct answer use the following code. पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हेले कौन रिग्रेसिव हुए ना नेगेटिव न हो कि भी रिग्रेसिव हुए से ऑप्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मेजर कल्चरल रीजन ऑफ वर्ल्ड इनहेबिटेंट्स ये किए रुहति 38 मैच करवा. आर्टिक रीजन रे द इंडियंस निग्रोस एंड इमिग्रांट्स. डेजर्ट रे काराभान. तापरे लैटिन अमेरिका रीजन ना यहाँ टी भूल रहा. आर्कटिक रीजन रे एस्किमोस. बरफांचल किए रहे एस्किमोस. डेजर्ट रे काराभान. लैटिन अमेरिका रीजन रे द इंडियंस निग्रोस एंड इमिग्रेंट्स. पैसिफिक ओशियन रीजन रे सामोआन्स
तहितियान तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैच क्लाइमेट टाइप्स देछि एटा जियोग्राफी रो क्लाइमेट चैप्टर रु आसी एटा कैरेक्टरिस्टिक्स देछि कोनटा मैच करिवो। एफ एफ रो सिंबल कोथि पय यूज करा जाय ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट पय एफ सिंबल यूज करा जाय। ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट। एम मॉनसून क्लाइमेट। एस ड्राई समर तो ऑप्शन ए ही जीवो करेक्ट आंसर। Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Select your answer from the quotes given below. The Peru desert is recognized as a cold desert. ना पेरू डेजर्ट टा कोल्ड डेजर्ट नुहे गोटे हट डेजर्ट। द टेम्परेचर ऑफ हम्बोल्ट करेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन कंट्रोलिंग द सरफेस एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरिया। हम्बोल्ट करेंट एमती जीव तो यहाँ कोस्टल एरिया रो टेम्परेचर को तापमात्रा को एठी नियंत्रण करने प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। एटा ठीक अच्छे रीजन आर इज ठीक ट्रू एंड एसर्शन ए इज फॉल्स तो ऑप्शन ना मुझे भूल कही। पेरू पेरू और हम्बोल्ट करेंट एटा जदि पेरू है एटा हम्बोल्ट करेंट जाइछि तो ये पेरू जो डेजर्टा अच्छे ये गोटे कोल्ड डेजर्ट और हम्बोल्ट करेंट यहाँ हूँ कोल्ड करेंट तो एठू यहाँ सरफेस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नहीं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो। मैच द फॉलोइंग रेसेस एठी रेसेस देछि एठी एरिया ऑफ एक्जिस्टेंस देछि कोनटा मैच करिवो। रेसेस द तुर्क इरानियंस कौटी रहती ये माने रहती नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजियंस। इंडो इरानियन राजस्थान और पंजाब। द स्काइतो द्राविडियन वेस्ट इंडिया गुजरात एंड कर्नाटक। द मंगोलो द्राविडियन ओडिशा और आसाम। ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए टी करेक्ट। नेक्स्ट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री व्वेयर इंडिया गोटे कृषि प्रधान देश जोठारे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर माने बहुत पॉपुलेशन जनसंख्या तार चाष उपर निर्भर करती डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट। रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट कौन सेंटेंस टी भूल अच्छी। एग्रीकल्चर इंडिया बाजरा इज ए खरीफ क्रॉप which requires 25 degree to 31 degree temperature and 40 to 50 centimeter rainfall। यहाँ ठीक अच्छे। कॉटन इज कैटेगराइज into 3 groups long staple, medium staple and short staple। ठीक अच्छे। Currently India accounts for about 50% of the world's total jute production। ठीक अच्छे। India is the second largest producer of silk and the largest consumer of silk in the world। यहाँ भूल अच्छे यहाँ ठीक अच्छे यहाँ भूल अच्छे तो ऑप्शन डी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैच इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन लिस्ट 1 विथ लिस्ट एरिया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया प्लेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कौन रिभर प्रोजेक्टा कौन रिभर उपर अच्छे। तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक एरिया रे अच्छी। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा रिभर उपर अच्छी गुजरात। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना रे अच्छी। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट पंजाब एंड हरियाणा एंड राजस्थान तो A3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच माउंटेन पास डजंट बिलोंग टू द करेक्ट स्टेट्स कौन पासटा कौन स्टेट रे अच्छी। सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश ठीक अच्छी। अगली पास नॉट इन उत्तराखंड दिस इज इन लद्दाख यहाँ लद्दाख रे अच्छी। दीपर पास अरुणाचल प्रदेश रे अच्छी। जेलेपला सिक्किम तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर कौनटा बिलोंग करूनी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक्स इन द मॉनसून
जलवायु परिवर्तन पाई कौन ऑप्शन गुड़िक ठीक? ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बेंगल। बे ऑफ बेंगल जदि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिन होची तो सेटा मॉनसून पाई ठीक। इराटिक बिहेवियर ऑफ सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ्स। अनियमित व्यवहार इक्वेटोरियल ट्रफ्स विषुवरेखार एटा भी ठीक। इनएडिक्वेट हिटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटू। इनएडिक्वेट ठीक हिसाब से हिटिंग नहेले तापमात्रा अधिक नहेले मॉनसूनटा वीक हो तो यहाँ फैक्टर नुह। साउथर्न ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल जेट री एस्टाब्लिश ओवर नॉर्थर्न इंडिया। यहाँ ठीक नॉर्थर्न इंडिया उपरे जेट ट्रॉपिकल जेट एस्टाब्लिश करिवो तो ऑप्शन 1 to 4। Which of the following rivers are exhibiting the antecedent drainage pattern in Odisha? पूर्ववर्ती जल निष्कासन प्रणाली प्रदर्शन करुछि। कौन रिभर दुईटी? महानदी और बैतरणी। ब्लैक अर्थ सॉइल हैज बीन डेवलप्ड इन व्हिच रीजन ऑफ ओडिशा? सॉइल चैप्टर जियोग्राफी रु आसी क्वेश्चन टी। ब्लैक अर्थ सॉइल कौन एरिया रे देखा जाए? यहाँ हो सम्बलपुर भैली रे ब्लैक सॉइल। यहाँ मेज मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स देछि लिस्ट 1 रे बेसिन एसोसिएटेड। 48 देखिबा द राजांगपुर पाम्पोस अपलैंड कोयल एंड सॉन्ग रिवर देखिए जाइए राजांगपुर राउरकेला। तापरे द झारसुगुड़ा अपलैंड्स इफ बेसिन झारसुगुड़ा अपलैंड रे अछि। बलांगीर टिटलागढ़ नॉर्दर्न तेल बेसिन। द मालकानगिरी अपलैंड्स द साबरी बेसिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Which of the following is associated with Chilika Lake? First Indian wetland under the Ramsar Convention। यहीटा तो ठीक अच्छी 1982 ना 81 देखिए आपण कमेंट रे दे लिखंतु। इरावाड़ी डॉल्फिन्स देखा को मिलती सेठी ठीक अच्छी। लेकोस्ट्रीन प्लेन ठीक अच्छी लुणी तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा एक्सपीरियंसेस व्हिच टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोपेन्स जो क्लाइमेट को भाग करछंती से अनुसार ओडिशा को क्लाइमेट रे अच्छी। आंसर टी हो ट्रॉपिकल साभाना। Which of the following statements are correct in respect of objective resolution of Indian Constitution? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किए देते जवाहरलाल नेहरू। तो यार चारोटी ऑप्शन रो कौन ऑप्शन गुड़ा ठीक अच्छी? द ऑथर ऑफ दिस रिसोल्यूशन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना एटा किए? जवाहरलाल नेहरू। इट वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 ठीक अच्छी। यहाँ एडप्ट कराई जनवरी 22, 1947 रे। द गोल ऑफ दिस रेसोल्यूशन वाज टू डिक्लेयर इंडिया एज ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना यहाँ भूल थिला। दिस रेसोल्यूशन लाटर फ्रेम्ड एज द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल हिसाब से ताको रखागला यहाँ ठीक अच्छी। तो ऑप्शन 2, 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड 42nd एमेंडमेंट रे ऐड करा जाइथिला तो सोशलिस्ट वर्ड नथिला सेथि। Which of the following statements are correct in respect of constituent assembly? constituent assembly को नेकी कौन चारोटी ऑप्शन रो कौनटा ठीक? The constituent assembly was constituted under the scheme of cabinet mission plan। या ठीक कि कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होता ठीक अच्छे। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओरिजिनली वाज 369 ना यहाँ 396 थिला तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। 296 सीट्स वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया यहाँ ठीक अच्छे।
ना 396 नथिला एटा 389 थिला 73 सीट्स टू प्रिंसली स्टेट ना 389 रु 296 काटी दिले आमे पाइबा 93 सीट्स तो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट 1 and 3 इज करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following pairs in respect of sources of Indian Constitution and pick up the right matching ऑफिस ऑफ गवर्नर कौटा ठीक अच्छे ऑफिस ऑफ गवर्नर इंग्लैंड रु करा जायतिला कि ना एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पब्लिक सर्विस कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक अच्छे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स नॉट यूएसए इट इज ऑस्ट्रेलिया टा भूल अच्छी द लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजटा आम ऑस्ट्रेलिया रु आनीचु एटा ठीक अच्छे 2 and 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर Which of the following articles of Indian Constitution are not related to each other? कोटा रिलेटेड नुहंती पार्ट अनुजाई को पार्ट रे आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट एटा रिलेटेड आर्टिकल 13 आर्टिकल 36 368 एटा होची लॉ इनकन्सिस्टेंट एटा लॉ इनकन्सिस्टेंट हेले एमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी रिलेटेड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 32 क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स तो एटा भी गोटे डायरेक्ट रिलेशन अच्छी आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 214 हाई कोर्ट तो सेम केस ऑल आर रिलेटेड Which of the following statements are correct in respect of lame duck politician? lame duck politician को पाई कौन ऑप्शन टी करेक्ट हैविंग लॉस्ट ए री-इलेक्शन बिट पुनर्बार निर्वाचन लड़ी पराजित होइतिले एटा ठीक अछि चूजिंग नॉट टू सीक अनदर टर्म आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म एटा भी ठीक अछि नो टर्म लिमिट रनिंग फॉर पर्टिकुलर ऑफिस लिमिट अच्छी नो दे देछि एटा भूल एवोल्यूशन ऑफ ऑफिस आफ्टर हिज हार ऑफिशियल टर्म एटा भी ठीक अच्छी तो ऑप्शन 1 to 4 इज करेक्ट आंसर Which of the following statements are correct in respect of basic structure of Indian constitution basic structure केशवानंद भारती केस रे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन आइता जो पॉलिटी गोटे इट इज ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू हाँ जुडिशियल रिव्यू जोटा कि फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करि परिबो नाही दिस इज ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू इट इज यूज्ड टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट्स हाँ कौन सी केस को लीगैलिटी टेस्ट करिवार अछि तो एटा को यूज करा जाए ठीक अच्छे द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गैप फ्री हैंड टू पार्लियामेंट टू एमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एटा फ्री हैंड देनी नॉट गिवन फ्री हैंड तो एटा इनकरेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म फंडामेंटल एंड सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करी नहीं तो एटा भी रॉन्ग तो ऑप्शन 1 and 2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Entry 5 of list 2 of 7th schedule of Indian Constitution deals with Indian Constitution 7th schedule रे 3 सब्जेक्ट अच्छी यूनियन लिस्ट अच्छी स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट लिस्ट 2 आसीज स्टेट लिस्ट तो एटा हो लोकल गवर्नमेंट Which of the following statements are correct in respect of Article 243 of Indian Constitution? Article 243C provides representation of chairperson of panchayats at the village level in the panchayat at the district level. 243C कही composition of पंचायत विषय तो एटा पंचायत एट द विलेज लेवल कही और इंटरमीडिएट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल रे यार ना नहीं तो ऑप्शन ए भूल हो आर्टिकल 243D provides representation for women to the offices of chairperson in panchayats at village level
243 डी कही रिजर्वेशन उपरे तो यहाँ ठीक अच्छे वुमेन रिजर्वेशन ठीक। आर्टिकल 243 आईटा कही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमिशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन इज रिलेटेड टू पावर टू लेवी टैक्सेस बाय पंचायत यहीटा भी ठीक अच्छे टैक्स उपरे। आर्टिकल 243 जे इज रिलेटेड टू बार ऑन द कोर्ट्स टू कॉल इन क्वेश्चन द इलेक्शन ऑफ पंचायत। 243 जे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत ऊपर अच्छे तो यहाँ भूल हो तो ऑप्शन 2 and 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऊपर कौन सेंटेंस टी ठीक अच्छे। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस लीगल बॉडी ना ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ तो यहाँ रंग हो। पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन एंड द इलेक्शन कमिशन यहाँ ठीक अच्छे। द इलेक्शन कमिशन वाज एस्टाब्लिश्ड ऑन जनवरी 25 1950 जनवरी 25 1950 रे एस्टाब्लिश करा कि हाँ। आर्टिकल 328 प्रोवाइड्स बार ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स ना आर्टिकल कौन आर्टिकल यहाँ देछि आर्टिकल 329 देछि तो यहाँ भूल जाओ ऑप्शन 2 and 3 ऑप्शन ए और डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत एट विलेज लेवल पॉलिटी रु बहुत क्वेश्चन आसूँ तुम पॉलिटी को केबे हेले ढिला करबनी पॉलिटी रु मैक्सिमम 15 ରୁ 20 क्वेश्चन तुम पाइज प्रति वर्ष करेंट अफेयर मिसिकी यहाँ हो विलेज लेवल अशोक मेहता कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऊपर कौन सेंटेंस टी करेक्ट अच्छे। अटॉर्नी जनरल यार आर्टिकल होची आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियरी रो पार्ट कि ना से गोटे एग्जीक्यूटिव रो पार्ट यहाँ हो भूल से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड हुआ किंतु यार एडवाइस नुह से यूनियन कैबिनेट रो एडवाइस रे नियंती। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स्ड करना यहाँ ठीक अच्छे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट माने तांकर अधिकार अच्छी जे दुई हाउस राज्यसभा लोकसभा दुईटे से टेक पार्ट अंशग्रहण करें तो ऑप्शन 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कौनटा ठीक इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बिल्स ऊपर इफ ए गवर्नमेंट बिल इज रिजेक्टेड बाय द हाउस इन पार्लियामेंट इट अमाउंट्स वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट जदि कौन से सरकारी बिल संसद गृह में प्रत्याख्यान हुए तेबे यह सरकार उपर आस्था भोट सदृश होता है भोट ऑफ कॉन्फिडेंस उपर पड़ी थाए ताहले एटा ठीक अच्छे। द गवर्नमेंट बिल इंट्रोडक्शन इन द हाउस नेसेसिएट ए 15 days नोटिस ना यहाँ गवर्नमेंट बिल 7 day नोटिस तो यहाँ भूल अच्छी। द टैक्सेशन लॉज बिल 2021 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मनी बिल टैक्सेशन टैक्स मनी बिल ठीक अच्छे। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021 कम्स अंडर ऑर्डिनरी बिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलटा ऑर्डिनरी बिल अंडर आसो यहाँ ठीक अच्छे। तो 1 3 4 करेक्ट आंसर 1 3 4 तो यहाँ 1 and 4 अच्छी 1 and 4 और 3 और 4 तो यहाँ करेक्ट हो पार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट को लेकिन कौन कौन सेंटेंस ठीक एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहाँ सब डेफिनेशन उपर कही एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या कहुए मोर देन 50% ऑफ द हाउस हैज टोटाल स्ट्रेंथ माने हाउस रो टोटाल स्ट्रेंथ रू 50% रू अधिक हेल्ले एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहुए ठीक अच्छे। सिंपल मेजोरिटी द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ दोज प्रेजेंट एंड भोटिंग रे सिंपल मेजोरिटी आसीबो एटा भी ठीक अच्छे। इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस इफेक्टिव स्ट्रेंथ टोटाल इफेक्टिव जिते प्रेजेंट अच्छा तो यहाँ भी ठीक अच्छे। इफेक्टिव स्ट्रेंथ
means total strength excluding number of vacancy. जदि total number of seats 100 अच्छी और प्रेजेंट अच्छा 90 जन ताको आम इफेक्टिव स्ट्रेंथ कह तो यहाँ ठीक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस यहाँ भूल अच्छी कहीं आउ गोटे हो मोर देन 50% जोटा बेसी हम सेटा हूँ स्पेशल मेजोरिटी तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कौटा ठीक सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऊपर को नहीं इन द ईयर 1955 इ लोकसभा कमिटी हैड proposed a timetable for parliamentary sessions with 3 times a year सेतेबेले माने वर्ष को 3 थर कह जाउतला इट सजेस्टेड बजेट सेशन फ्रॉम फेब्रुआरी 1 to May 7 एटा ठीक थिला मॉनसून सेशन जुलाई 1 रु सेप्टेम्बर 10 एटा भूल थिला इट सजेस्टेड विंटर सेशन फ्रॉम नवेम्बर 15 to डिसेम्बर 15 एटा भूल थिला तो ऑप्शन सी 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही वर्ष पुणी ये क्वेश्चन रिपीट होती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट टू एनालिसिस अंडर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट फॉलोज द प्रोसीजर इट हैज एस्टाब्लिश्ड इट एक्शन आर कंसिडर्ड वैलिड इवन इफ दे मे अपियर अनफेयर और अनजस्ट टू इंडिविजुअल्स प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ जो तैयारी होइछि से अनुसार जो जदि सेटा भी अनफेयर है अनजस्ट है भी सेटा वैलिड हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज ए लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बट ऑल्सो सीज इफ द लॉ मेड इज फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिट्रारी ही नथिबो किंतु फेयर जस्ट थिबो सेटा होछि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आईन प्राप्य प्रक्रिया सिद्धांत केवल जड़े व्यक्तिर जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनतार वंचित कर आईन अच्छी कि नहीं ताहा जांच करे नहीं बरम तैयारी होता आईन उचित न्यायपूर्ण और स्वच्छाचारी कि नुहे ताहा देखे यही फेयर जस्ट और नॉट आर्बिट्रारी तीन ऊपर चेक करे सेटा प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ इज एन अमेरिकन डॉक्ट्रिन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन यहाँ ठीक भूल अच्छी कहीं प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एटा होची आमर इंडियन लॉ आउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होची अमेरिकन डॉक्ट्रिन तो ऑप्शन एटा भूल 1 2 करेक्ट सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल परस्यूइंग कॉमन इंटरेस्ट ऑफ देयर ग्रुप्स अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एटा गवर्नेंस चैप्टर आसी जो पॉलिटी और गवर्नेंस 66 या को कह प्रेशर ग्रुप्स During which part of the public policy cycle does the government explore potential policy responses? एटा भी गवर्नेंस 67 डायरेक्ट डेफिनेशन रू आसुची बी पॉलिसी फॉर्मुलेशन या को कहती द फाइनल 6 months of the election cycle when the government announces popular government initiative is known as या को रेड जोन कहती 6 months of the election निर्वाचन चक्र शेष 6 मास जितेबाला सरकार लोकप्रिय सरकारी पदक्षेप घोषणा करती यहाँ रेड जोन लास्ट 6 मास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस एटा भी गवर्नेंस रो पॉलिटी गवर्नेंस यार आंसरटा हो देखा गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी रहा कथा कंजर्वेटिव हवा कथा नुह रिजिडिटी भी हवा कथा नुह ट्रांसपेरेंसी हवा कथा इंटीग्रिटी हवार कथा माइक्रो मैनेजमेंट हवार कथा नुह जोटा कि लार्ज मैनेजमेंट मैक्रो हवा कथा तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पब्लिक पॉलिसी पाई कौन सेंटेंस ठीक अच्छी इट इज ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिक पॉलिसी पाई रूल्स रेगुलेशन दरकार ठीक इट इज ए मीन ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज गोटे मूल्यबोधर आधिकारिक आवंटन एक माध्यम अटे ठीक इट इज ए फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक पॉलिसी इज पब्लिक सेक्टर नॉट प्राइवेट सेक्टर
What the government choose to do or not to do public policy ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ option D is the correct option. Which one of the following statements is correct in respect of Article 21 of the Indian Constitution? Article 21 ହେଉଛି ଗୋଟେ fundamental right ର part 3 ରୁ ଅଛି. It guarantees right to life and personal liberty. ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି. In case of Narmada Bachao Andolan versus Union of India 2020, Supreme Court held that right to water is not a fundamental right but legal right. Right to life fundamental right बोली Supreme Court कहिथिला not नुह एटा ठीक माने एटा भूल अछि not कहि दैछि. Right to water is inferred from the right to life एटा ठीक अछि. The Supreme Court also held that access to clear water is a natural right. एटा गोटे natural right की ना एटा भी ठीक अच्छी 1 3 4 तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर. From which constitution suspension of fundamental rights during emergency was borrowed to Indian Constitution? तुमको टिके आर्टिकल पार्ट कौठू कौ जिनिस अणा जाइछि एटा माने दुईटा क्वेश्चन हला प्रीवियस गोटे थिला एबे गोटे आसिलानी तो एटा ही जिवो हमरो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ओएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी डायरेक्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन पई को ऑप्शन टी करेक्ट हे जिवो आर्टिकल 21A of Indian Constitution provides right to education for free and compulsory education to all. ना एटा आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट रे करा जायतिला जहा कि एजुकेशन राइट टू एजुकेशन ऊपर थिला राइट टू एजुकेशन एंड फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल नो एठी एथि पई ऑप्शन टा भूल हे जायछि एठी थिला 16 to 6 ru 14 year. Right to Education Act was passed by Indian Parliament on August 4, 2009. एटा ठीक थिला 86 अमेंडमेंट ठीक अछि. Right to Education came into force on November 14, 2009. एटा नो तो ए ऑप्शन ठीक हला माने एटा भूल. Article 21A was inserted in the Constitution by 86 Constitution एटा ठीक अछि. तो ऑप्शन 73 2 and 4 option D is the correct answer है. Which of the following are related to right to privacy? Right to privacy article 21 रे आसी जिवो article 21 ठीक अछि. article 12 of universal declaration of human rights एटा भी गोटे right to privacy part. article 70 untouchability एटा भी गोटे international convent. आर्टिकल 17 ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एटा भी ठीक अछि यार आर्टिकल 17. आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एटा भी ठीक अछि तो आर्टिकल 74 ऑल आर्ट्स राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. व्हिच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल्स दैट राइट ऑफ नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन वन्स विश एवरीवन has the right to a nationality एटा कौन आर्टिकल कहूँ एवरीवन है राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कौन आर्टिकल आंसर जो आर्टिकल 15. नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन टार्गेटिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर क्वेश्चन आसी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. In May 2016, the RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework. 1934 संशोधन करा जाय नमनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचार कार्यान्वयन पई एक विधिबद्ध आधार प्रदान करा जायतिला एटा ठीक अछि. Under section 45 JD the central government in consultation with RBI determines the inflation target in terms of the consumer price index once in 5 years. प्रति 5 वर्ष रे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टा चेंज करा जिवो इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट एटा भी ठीक अछि. On March 31, 2021 the central government returned the inflation target of 6% with the tolerance band of
एठी हो 4 + -2 नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड एटा भूल अच्छे से तो यहाँ कौन हम आंसरटा 1 and 2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो 76 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिलेशन टू द G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023 रे G20 आमर होता न्यू दिल्ली रे ये वर्ष 2025 इम्पोर्टाट रौटी कौन तार माने डिक्लेरेशन करिसंती सेटा टिके देखिबो मु नेक्स्ट वीडियो रे आनिबी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु ऑल 83 पैराग्राफ्स ऑफ द 2023 G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन वर अनएनिमसली अप्रूव्ड एटा ठीक It did not feature the conflict in Ukraine and its subsequent economic implication. एटा फीचर करथिला यूक्रेन और रूसिया रो युद्ध को तो एटा भूली जिवो The declaration stressed the urgency of mobilizing $4 trillion US per year for clean energy technology by 2030 2030 जाए क्लीन एनर्जी टेक्नोलोजी को गतिशील करइबो एटा ठीक अछि तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मनरेगा is recognized as core of the core scheme for achieving sustainable development goals in India. Manrega was reported in the voluntary national review 2070 by Government of India for its contribution to achieving which of the following sustainable development goals directly. Sustainable development goal total 17 अच्छी तो यहाँ कौटे करेक्ट ऑप्शन हम 1 नो पॉवर्टी यहाँ ठीक अच्छे 0 हंगर भी हम मनरेगा जेंडर इक्वालिटी भी हो पार रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज भी हो पार तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो 4 ऑप्शन ठीक अच्छे नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन यहाँ इकोनॉमिक्स पॉवर्टी चैप्टर 2023-24 रे भी पॉवर्टी चैप्टर रू आसीला क्वेश्चन Poverty line estimation in India has been based on the consumption expenditure and not on the income levels. एटा तो ठीक अच्छे इनकम लेवल को आधार करिक करा नहीं से कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर को आधार करिक पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन करा 2023-24 रो एनालिसिस मु करि सारी छी वीडियो चैनल रे अच्छे जाइकी देख It is difficult to assess incomes of self-employed people, daily wage laborers, etc. And there may be large fluctuation in income due to seasonal factors. Seasonal factor पाई हमरो इनकम लेवल अप डाउन होची फ्लक्चुएशन तो यहाँ भी ठीक अच्छे किंतु कौन कही 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 ना यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुह इनकम लेवल्स ऊपर जेहेतु यहाँ करनी आधार करिकी तो सीजनल फैक्टर तार रीजन हो पार ना तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन सीजनल फैक्टर तार माने गोटे कारण हो पार कहीं इनकम लेवल्स कहीं अप डाउन होची सीजनल फैक्टर्स तो से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व कंपोनेंट्स कौटा फॉरेन एक्सचेंज रिभर फॉरेन करेंसी एसेट हो गोल्ड हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हम रिजर्व इन द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हम तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू पीएम विश्वकर्मा सेते बेले एटा करेंट अफेयर रे थिला तो सेति आसी क्वेश्चन देखीदेवा कौन अच्छे आंसर कौनटा ट्रू नुहे It was learned in the president by the president. एटा प्रेसिडेंट नुह प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ भूल हो इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहाँ ठीक अच्छे द न्यू स्कीम इंटेंड्स टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड होलिस्टिक सपोर्ट टू द ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन वर्किंग विथ देयर हैंड्स एंड एलिमेंटरी टूल्स ठीक अच्छे The scheme intends to improve the quality, scale and reach of artisan products and also to integrate them with MSME value chain. एटा भी ठीक अच्छे तो कौनटा ट्रू नुह ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जो स्कीम योजना जहाँ भी अच्छी यही वर्ष करेंट अफेयर रे माने न्यूज रे सेटा निश्चित आसीबो 2टी क्वेश्चन श्योर पाइबो तुमे
with reference to GST, which of the following statements are true? कोटा ट्रू GST पर GST is based on a system of concurrency of indirect tax. GST indirect tax है कि अटे कि हाँ where every transaction attracts central as well as state GST ठीक अच्छे. GST replaced a production based taxation system by a consumption based tax system. प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेसन एटा भी ठीक अच्छे. रिप्लेस्ड कला एटा क्या कंजप्शन बेस्ड टैक्सेसन. रिप्लेस्ड ए प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेसन सिस्टम बाय कंजप्शन. ए प्रोडक्शन को रिप्लेस्ड कला गोटे कंजप्शन बेस्ड. इट ब्रिंग्स परिवर्तन होती. इट ब्रिंग्स डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग. क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग फॉर व्हिच द पोअर एंड कंज्यूमिंग स्टेट्स आर बेनिफिटिंग at the expense of more affluent and industrialized ones. এটা भी ठीक अच्छे. तो ऑप्शन 82D हो आंसर. Which of the following statements is incorrect about production linked incentive scheme? It is one of the several schemes as part of the Make in India initiative. Make in India रो initiative এটা ठीक अच्छे. Its aim is to incentivize manufacturers and promote domestic production. डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने और मैन्युफैक्चर को प्रमोट करवा यार लक्ष्य ठीक अच्छे. दिस इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट्स टू एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस को एनहांस करी उत्साहन देछि. एटा भी ठीक अच्छे. दिस स्कीम इज एप्लिकेबल ओनली द वर्ड की वर्ड से इटा भूल जाव. मेनी सेक्टर नॉट ओनली फोर सेक्टर. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. In discharging its role as a facilitator for rural prosperity, NABARD is entrusted with the responsibilities of. NABARD रो दायित्व कौन? Providing refinance to lending institution in rural area. rural areas रे NABARD रो दायित्व रही. तो यहाँ हूँ तार करेक्ट आंसर. इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू countries experiencing falling child sex ratio. Which among the following statement could be the major reason behind this phenomenon? Child sex ratio falls हेबापाई माने डाउन हेबापाई आमर रीजन कोटा ठीक ही पारिबो ए दुई भितर. आंसर टी जीवो हाई फीमेल इनफेंट मोर्टालिटी. एटा हबनी. फीमेल को जदि तुम मारिदेव ताहले चाइल्ड सेक्स रेशियो कमी जीवो कि ना. फीमेल फर्टिसाइड एटा ठीक हम. यहाँ फीमेल फर्टिसाइड जदि आम फीमेल को मारिदेवा और खाली बॉयज रे ताहले केमिति चाइल्ड सेक्स रेशियो कमिबनी कि एटा कमिज. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस रो डेफिनेशन टी देला. तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट इनक्लूडेड अंडर द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस रे कौन गैस इनक्लूड नुह? कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एटा इनक्लूड अच्छी. नाइट्रस ऑक्साइड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एथिपाई भी ग्रीन हाउस गैस सृष्टि हुए. कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एटा नुह सल्फर डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एटा हम. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next, more than 90% of all nitrogen are fixed as ammonia, nitrites and nitrates by soil microorganism. Symbiotic bacteria associated with leguminous plants fix nitrogen by the formation of root nodules. In which of the following plant nitrogen fixation does not occur? कौन प्लांट रे आम नाइट्रोजन फिक्सेशन हुए ना. आंसर टी हेब एटा जनरल साइंस 9th 10th क्लास बुक रे एटा अच्छे. कॉमन बीन्स रे हम सोयाबीन रे हम पीनट रे हम ओट्स रे हेनी. तो आंसर टी हो ऑप्शन डी. फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल species and to provide for prevention and control of water pollution, air pollution and the environment, Government of India has taken adequate steps and several prevention, control and protection acts has been enacted. Which of the following? एटा देख माने विभिन्न वर्ष रे विभिन्न आसे
गला प्रिवियस ईयर रे 2022-23 क्वेश्चन जो देखिए से क्रोकोडाइल आसी कौ वर्ष टाइगर आसूची टाइगर लंच टाइगर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट माने एथर माने एटा द वाटर एक्ट केबे करा जायतिला यार करेक्ट आंसर टी तुमको द वाटर एक्ट 1974 यार एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कहिछि तो यार एक्ट 1981 एनवायरनमेंट एक्ट 1986 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 तो ऑप्शन ए टी करेक्ट है जीवो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कथा कह जायछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्ट कोटा कोठी अछि गंधमार्दन हिल रेंज बरगड़ एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे अछि कि नाही एटा एठी ही अछि गंधमार्दन हिल मंडासरू गर्ज कोठी अछि एटा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे नाही कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे नाही एटा होछि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट सातकोशिया गर्ज अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे अछि महेंद्रगिरी हिल रेंज गजपति डिस्ट्रिक्ट रे अछि तो माने जियोग्राफी रो मैप रु आसुची क्वेश्चन तो ऑप्शन कोटी नुह कहिछि तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एक्नोलॉजिंग द इयर्स ऑफ एफर्ट्स ऑफ ट्राइबल पीपल इन कंजर्विंग 130 varieties of indigenous cultivars of rice Koraput district was declared as a globally important agricultural heritage system which one of the following pairs is correct कोटा करेक्ट कहि देखिबा 90 रो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन 1982 एटा भूल जीवो को पेयर ठीक एटा 1992 एटा भी भूल जीवो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन 2012 हेबो करेक्ट आंसर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर देख प्रोजेक्ट टाइगर एबे कहितली एटा आसी छि प्रीवियस रे भी प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आसी छि प्रोजेक्ट एलिफेंट आसीबार चांस अछि द लार्जेस्ट स्पीसीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड ऑन 1 April 1973 to promote conservation of the tiger 9 tiger reserves were established in different states of India in the year 1973 which one of the following combination does not include the tiger reserve established in the year 1973 आ गोटे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसार वेट्स एटा सब निज को टिके देखिया पड़ो कौटा कौ जगार अवस्थित देखिबा एटा कौटा कहला क्वेश्चन डज नॉट इनक्लूड 91 देखिबा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एटा इनक्लूड थिला 1973 रे मानस टाइगर रिजर्व सुंदरबन एटा भी इनक्लूड थिला रणथंबोर टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व एटा इनक्लूड नथिला ए मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया इज एसेंशियली एटा डेफिनेशन देला मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया रो इज एसेंशियली ए स्पेस इन द ओशियन व्हेयर ह्यूमन एक्टिविटी गोटे स्पेस ओशियन रे गोटे स्पेस जोटार कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंड दिज प्लेसेस आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर नेचुरल और हिस्टोरिक माने मनीषर कार्यकलाप से पूरा बैन कराई स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड आ जो थारे कि नेचुरल और हिस्टोरिक मेराइन रिसोर्सेस को संरक्षण दे जाइए बाय लोकल स्टेट टेरिटोरियल नेटिव रीजनल एमाने माने संरक्षण दौरान व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया कोटा गोटे मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया हम ना पेरियार इन केरला यहाँ हेनी भितरकनिका हम मालवान मेराइन इन महाराष्ट्र हम कोरिंगा आंध्र प्रदेश द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट was held in Rio de Janeiro, Brazil रे हेतिला अर्थ समिट 1992 रे हेतिला which one of the following combination of statements about the conference is correct कोटा correct this global conference was held on the occasion of 20th anniversary of the first human environment conference held in Stockholm, Sweden first human environment 20 नंबर वर्ष एनिवर्सरी रे स्टार्ट करा हेतिला स्टॉकहोम स्वीडन रे ठीक It focused on the impact of human socio-economic activities on the environment. Human socio-economic ठीक अच्छी
Representative from 79 countries participate in the conference, not 79. এটা ভুল ଅଛି তো आंसरটি ହେଇଯିବ 93 1 and 2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Microsoft, the recipient of UN Global Action Award, is now committing to remove from the environment all the carbon the company has emitted either directly or by electrical consumption since it was founded in 1975 by 2050, from which year the company has adapted to be carbon neutral. Carbon neutral ହେବା ପାଇଁ କେବେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? 2012 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। World Environment Day is United Nations Day for encouraging worldwide awareness and action to protect our environment. In 1972, UN General Assembly designated 5 June as World Environment Day. The first celebration under the theme Only One Earth took place in 1973. 1973 रे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे रो थीम थिला ओनली वन अर्थ। देयर आफ्टर एवरी ईयर द डे इज सेलिब्रेटेड विथ ए थीम। प्रति वर्ष गोटे गोटे थीम रे सेलिब्रेट करा जाउची। तो कोटा ठीक न 2023 रे थीम एटा थिला कि 2023 रो थीम हाँ सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन थिला। ए वर्ष यार थीम कोन अछि कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाବରେ जणांतु। 2022 ओनली वन अर्थ एटा भी थिला। 2021 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एटा भी थिला। 2020 टाइम फॉर एनवायरनमेंट एटा नथिला तो ऑप्शन डी हिजबो करेक्ट आंसर। 1 लाइट ईयर इज इक्विवेलेंट टू रफली हाउ मेनी किलोमीटर्स? 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। जेट फ्यूल यूज्ड इन टर्बाइन बेस्ड एविएशन इंजिन मेनली कंसिस्ट ऑफ जेट फ्यूल कोथरे कंसिस्ट एटा केरोसिन एटा नॉर्मल जनरल क्वेश्चन। The light emitting diode is made of general science gallium nitride. Gallium meniscus rise in glass thermometer is due to the change in density general science. A glass of tap water, distilled water, sea water is cooled to its solidification. मैंने तुम्हें 3टी ग्लास रे वाटर नब गोटे थी टैप वाटर गोटे डिस्टिल वाटर और गोटे सी वाटर द ऑर्डर इन व्हिच दे विल सॉलिडिफाई फास्ट कौन प्रथम बरफ सृष्टि हम देखिए सॉलिडिफाई क्रम अनुजाई कहले कौन हम आंसरटी प्रथम डिस्टिल वाटर टी सॉलिडिफाई हम तापर टैप वाटर तापर सी वाटर रे बहुत सॉल्ट अच्छी ए सॉल्ट ही नहीं तो आम ये भली ताको एग्जामिन करिकी कहि परिबा। तो सेशन टी कंप्लीट हला। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। नेक्स्ट वीडियो पुणी करिबी। थैंक यू।